So stay on with me. I'd like your perspective on some more news that is coming in. Our sources are also stating that the entire 11-hour route of this I20 car has now been charted out. According to information, the car was first seen outside Faridabad's Asian Hospital at 7:30 a.m. yesterday. Then at 8:13 a.m. the car crossed the Badarpur toll and entered Delhi. At 8:20 a.m. the car was seen near a petrol pump near the Okhla industrial area. At 3:19 p.m. the car entered the parking lot near the Red Fort complex and then remained parked there for approximately 3 hours. At 6:22 p.m. the car pulled out of the parking lot and then of course it headed towards that busy street with other cars as well. And just 24 minutes later at 6:52 p.m. the explosion occurred while the car was still moving. I want to understand from you, Mr. Shashikant, given the details that are now coming out, does this indicate that this was some sort of a remote explosion that was possible, that's taken place near the Red Fort yesterday? Given that this car, as per the information we have, was, it seems, moving around with the explosive material almost all day. Yeah, it was moving around. Again, I'll say that I'm not a part of the investigating team. My guess is that when the police raided that particular place where there's all this explosive material was stored in, probably the guys, this person who was driving the vehicle, or maybe his colleague, they got spooked and they tried to shift the material to some other place, and they said, okay, it's about the time that they're going for another blast somewhere in some crowded place so that there is some damage and they get their stupid kind of mileage out of it. So, and talking of the remote, if the remote was there, then this person could have parked the vehicle. It was slow moving vehicle, could have parked the vehicle on one side and got out and exploded. But it exploded, which to my mind appears to be a suicide kind of thing. And if we talk about the suicide bombers, and we have seen a few of them, like in case of Rajiv Gandhi or Sardar Beyant Singh, the Chief Minister of Punjab, who had to face this thing. This is the most sinister aspect of this entire planning and this execution of this rotten and what that kind of whatever stupid activities they were indulging in, which opens Pandora's box that with the entire new guidelines will have to be spelled out, new SOP will have to be spelled out. So it's very serious, and I don't think there was remote. Had there been any remote control device, then possibly this person could have got out, mingled in the crowd, and moved around. But it appears that as per the reports are coming in, various newspapers, news channels are saying probably he perished there. So it means that it was basically a suicide kind of attack. How it happened at that point, again, that's right now it's conjecture, because only the forensics have to tell how it happened. Maybe he was trying to take this explosive out to some other place. Maybe it was a railway station, maybe metro, or maybe some other place of importance, which could have had very sinister kind of repercussions therein. So this is for the investigation, and I think we'll have to wait for the investigation. But my viewpoint is, as on date, that probably it was a suicide kind of attempt, and I don't think that any remote control was used. Had it been like what is submitted, then he would have got out of it and mingled in the crowd and moved on. Thank you. Right, absolutely. So thank you so much for joining us on the broadcast with those details. My colleague Javed Hussain back with us as well. Javed, take our viewers through the latest that you're picking up as far as the CCTV footage of the car is now concerned. We've accessed CCTV footage which shows the car undergoing a pollution check just a few months back. जी हाँ, ये जो सीसीटीवी जो पॉल्यूशन चेक करा रही है इस गाड़ी जिससे ब्लास्ट हुआ है, ये 29 अक्टूबर का फुटेज सामने आया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जब टीम पूरी एक रूट मैप को एग्जीक्यूट कर रही थी, आईएसबीटी जो है मतलब रिवर्स जो है, दिल्ली पुलिस ने इसको रिवर्स जो है इस फुटेज को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की रात से ही, क्योंकि गाड़ी जहां से पार्क होने के बाद जो जानकारी मिली कि वहां से पीछे दिल्ली पुलिस गई, वहां से कश्मीरी गेट के पास वहां की सीसीटीवी को एग्जीक्यूट किया गया
उसके बाद आगे आईएसबीटी से फिर रिवर्स होते हुए पूरा एक जो रूट मैप है यहां से बैक रिंग रोड से होते हुए सीसीटीवी को रिवर्स इन्वेस्टिगेट करते हुए सीधा बदरपुर तक जो पुलिस वहां तक पहुंची और रिवर्स इन्वेस्टिगेशन के बाद सीसीटीवी जो है बदरपुर से फिर बैक को एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि जो ब्लास्ट जिस तरीके से हुआ दिल्ली पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन यानी कि टेक्निकली सर्विलांस और टेक्निकली एविडेंस के बेस पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया कि गाड़ी कहां से कैसे पहुंची होगी। तो ये रिवर्स एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ जिसका जो लास्ट जो एंड है वो आपको कल तक जो था वो जो सुबह की अगर बात करें, मंगलवार की सुबह की बात करें तो ये बदरपुर टोल के पास जाकर जो है ये जो इसका बेस है जो वहां पर मिलता है। उसके बाद ये सीसीटीवी फिर रिवर्स करके दिल्ली पुलिस जो है पीछे फरीदाबाद तक जाती है और इसी दरमियान हर एक सीसीटीवी को खंगाला जाता है, देखा जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसमें ये जो फुटेज है ये भी सामने आया है। अभी दिल्ली पुलिस को ये फुटेज मिली है जो सोर्सेज के हवाले इस वक्त जो है जो NewsX और इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जो ये फुटेज है जो जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये गाड़ी पॉल्यूशन के लिए वहां पे चेक करा रही है। मतलब कि इस गाड़ी को 29 अक्टूबर के वक्त से ही रखा गया था और इस गाड़ी को कई बार बेचा गया। यानी कि अब सलमान का रोल किस तरीके का इसमें इन्वॉल्व है, सलमान के अलावा देवेंद्र को किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। इसके बाद अंबाला में जहां पे इसे बेचा गया और अंबाला के बाद जब ये गाड़ी जम्मू कश्मीर तक पहुंची, यानी कि इस बीच कई जो गाड़ियां वो चेंज हो जो ऑनर चेंज होते रहे। क्या इसको एक पूरे प्लानिंग के तहत इसको रखा गया और जब इस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया, पार्क किया गया तकरीबन 3 घंटे तक, तो क्या इससे पहले भी इस गाड़ी से कोई रैकी की गई थी? इसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस रिवर्स इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, यानी कि कई टीमें इसमें लगी हुई है। हालांकि अब इस केस को पूरी तरीके से जो जानकारी यही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब एनआईए की जो जाँच एजेंसी है, जो उनके अधिकारी हैं, वो इस पूरे केस को जो इसे टेरर मॉड्यूल माना जा रहा है उसे लेकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब इसमें जो ब्लास्ट किस तरीके से किया गया, टाइमर जिस तरीके से मिला धौच में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए पे लिए हुए मकान को, जबकि वो उसे इस्तेमाल नहीं करता था, सिर्फ सामान के लिए उसने रखने के लिए इस कमरे को लिया था। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग है पहले से चल रही थी। अब एक तरफ ये भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इसका जो रूट मैप है, जैसा कि ये भी जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर से डॉक्टर सज्जाद नाम के एक शख्स को भी पकड़ा गया है और उसको भी इस कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल से लेकर जोड़कर अब उसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें कई कड़ी जो है अभी आना बाकी है। इसमें कई जी लोग जावेद, हैं thank you so much for joining us with those details. We're going to leave it there for now, and we're going to slip into a very quick break. On the other side, I'm going to come back with my colleagues from Jammu and Kashmir. More news coming in. Stay tuned.